the Viterbi decoding algorithm. And just a quick reminder, as you know, that the Viterbi decoding algorithm is based on the principle of maximum likelihood, and based on this principle of maximum likelihood, we are trying to find a path, an optimum path which has a minimum path metric. And in order to accomplish Viterbi decoding, we first need to have a decoder trellis. So that's the first thing we construct. And in order to construct the decoder trellis, we need two things. We use the received bit sequence and the encoder trellis. Because the receiver has prior knowledge of the encoder trellis, so it uses that as a reference, and then based on comparison with the received sequence, it is able to generate a decoder trellis. What you have to remember, that the decoder trellis will be unique for every received bit sequence for the same encoder. So while the encoder trellis remains the same, that is generic for a specific type of encoder, the decoder trellis will change for every received bit sequence. So it's not the same for every received bit sequence, because हर एक received bit sequence का जो comparison होगा encoder trellis से, उसका आंसर अलग निकलेगा. तो हर ब्रांच पे ब्रांच मैट्रिक, एंड एज अ रिजल्ट पूरा डिकोडर ट्रेलिस जो है उस पर जो फिगर्स लिखे हुए हैं ब्रांच मैट्रिक्स और पाथ मैट्रिक्स, वो चेंज हो जाएंगे, द रिसीव बिट सीक्वेंस चेंज हो जाएगा. ठीक है. सो वंस यू हैव ड्रॉन द डिकोडर ट्रेलिस, देन द नेक्स्ट स्टेप इज द एलिमिनेशन ऑफ लीस्ट लाइकली पाथ्स. सो व्हेन वी स्टार्ट कंपेयरिंग द पाथ मैट्रिक्स, द पाथ विद द ग्रेटर path metric, a greater value of path metric, those paths are eliminated for every node or every state, and the surviving paths are retained, and then the decisions for decoding or demodulation, they are based on the surviving paths and their path metrics. Okay, so now the next block we are going to study in our digital communication system is that of digital modulator. So that's the focus of attention during this week. And modulation, as you know, is normally the last step before the signal goes out to the channel. So whatever conditioning needs to be done to the signal is done in this block. So the signal is basically prepared for transmission over the channel. That is the main purpose of modulation. So digital modulation is what we are doing next. Okay, so just a quick recap of modulation. The generic definition for modulation could be the modification of some parameter of a carrier signal, and the carrier signal is usually a sinusoid or a pulse, we know that. So the modification of some parameter of a carrier signal in accordance with the variation in the message or the information signal. So what parameters we can vary? We have already studied that we can modify the amplitude, phase or frequency of a sinusoid, and in terms of pulse we can modify the width, the position and the amplitude of a pulse. So these are the parameters we can modify. So why do we modify a carrier in accordance with the message signal? In order to transmit the message signal, which is not always suitable for transmission over the channel. So without modulation, the message signal or the information signal would not be suitable for transmission directly over the channel. So that is why we modulate it first. So the point is that modulation basically converts the message or the information signal into such a signal which is suitable for transmission over the channel. So that is the main purpose of modulation, and for that purpose we use another signal other than the message or information signal, which is called the carrier signal. We modulate it, and by modulation we mean that we change one or more of its parameters in accordance with the message signal. Coming over to the classification of signals, we have a broader categorization, a baseband signal or a passband signal. What is a baseband signal? There are multiple definitions. A signal whose spectrum extends from or is near to DC, has zero frequency,
up to some finite value. So it will be a band limited signal starting from 0 or near 0 and going up to some finite value. So that is why such signals are also called low pass signals. So baseband signals, according to this definition, are also called low pass signals. Generally, baseband signal refers to the signal before modulation. So that is another place where this term baseband signal is used. So before modulation, whatever the signal is, that is termed as baseband signal. And baseband signal also refers to the original frequency range. So while the signal remains in its original frequency range or near to its original frequency range, it is termed as baseband signal. So these are all different interpretations or definitions of the baseband signal. Now, in contrast, coming to the passband signal, that refers to the signal that is transmitted. So the signal that is actually transmitted is called passband signal. That's one definition. It also refers to the signal after modulation. So before modulation, the signal is baseband. After modulation, it's called passband. And while baseband refers to the original frequency range, the passband, it refers to the higher frequency range. And so these are some of the differences in terminologies between baseband and passband. And I've also shared a link to a YouTube video about the difference between baseband and passband. To clarify, if you want to spend more time on it, you've got a small tutorial related to that. So as we previously discussed, two major types of modulation: CW, continuous wave modulation, and pulse modulation. And we know that from our previous knowledge from communication systems course that in CW modulation, the carrier is usually a sinusoid of high frequency, and one or more of its parameters, that is frequency, amplitude, phase, one or more of them can be varied in proportion to the message signal. Normally one at a time, to keep the modulation simple. So either we have the AM, FM or PM. When it comes to pulse modulation, we've got three main types that we have studied in communication systems. Those are pulse amplitude modulation, the pulse width or the pulse duration modulation, and the pulse position modulation. And all of these parameters, we have studied them in communication systems. So they basically form part of what we called analog modulation schemes, because the data that is modulating the carrier, that is analog in nature. So based on our definitions of baseband signal and passband signal, we then also have baseband modulation and passband modulation. So baseband modulation is when we send the information signal as it is without modulation, or we can say without frequency shifting. So even if there is modulation, the frequency range generally remains the same. So in that case, we call that modulation a baseband modulation. Where is it used? Usually over wires or guided media, not in wireless communication. And one book defines, many sources define baseband modulation as the modulation that allows the signal to use the full bandwidth of the channel. So whenever we have a scenario where the full channel is being used, the full channel bandwidth is being used by the signal, so we call it baseband modulation. A classic example of baseband modulation is the PCM waveform types we have studied, the line coding types, because if you remember, we are basically representing those bits by different pulses, and if you pick any pulse, generally the bandwidth requirements of pulses are very similar. So we don't really have a major frequency shifting when we change from one pulse form to the other. So that also falls under baseband modulation. Similarly, Emery pulse modulation, so going for levels higher than 2, that also falls under baseband modulation. So from 2 levels going to 4 levels, the 2 level is a pulse and the 4 level is also a pulse, so it's from pulse to pulse. So that is also basically baseband modulation.
Coming over to passband modulation, in passband modulation we will see a shifting of the spectrum, so shifting the signal to be transmitted in frequency to a higher frequency and then transmits it, where at the receiver the signal is shifted back to its original frequency. So we normally see a frequency shift or a frequency translation. Whenever we do that, that is basically passband modulation, and that is what happens in over the air or wireless communication, because that is when we shift to higher frequencies. Take the signal of your mobile signal, your audio signal is up to 4 kilohertz, but when it is sent to the BTS, it is at 900 megahertz or 1800 megahertz or 2100 megahertz. So it has been modulated, and that modulation is passband modulation. Okay, so how do we define digital modulation? Well, digital modulation can be defined as the process by which the characteristics of a carrier wave are varied among a set of predetermined discrete values in accordance with the digital modulating function. So you must remember that in digital communication, at every stage we have a predetermined, a finite set of discrete values, and whatever that block of digital communication system is, that is selecting one of them. So we will vary characteristics of a carrier wave, but that variation will not be random. So one of the discrete values will have to be picked in accordance with the modulating signal or the message or the information signal, which will be digital. So just note here that in digital modulation definition, the modulating signal is digital. That's what you have to remember. So it refers to modulation when data is digital. The carrier can be, of course, analog or digital. So that basically splits digital modulation in two broad categories. One is digital bandpass modulation, where we have the data is obviously digital but the carrier is analog. Can you think of any examples where the carrier is analog but the data is digital? Think of some examples before the class. And then we have digital baseband modulation, where the data is digital and the carrier is also digital. Once again, I want you to think of some examples which can fall under this category to act as a revision or a rehearsal for the class. Now coming over to the sinusoidal carrier signal, it's a very special type of carrier. Why is it selected as a carrier? Why not any other periodic signal? Why a sinusoid? Because it is natural. The sinusoidal cycle, it occurs in so many things naturally. So that is something which comes from nature, and that is why it is easily constructed. It can be easily generated. You just need a natural source. Of course, it is simple. Other periodic signals have composite multiple frequencies embedded in them, but sinusoids have single frequency. There are sources available even naturally. When we were doing amplifiers and oscillators, we discussed, for example, the piezoelectric crystals or the quartz crystals. They exist in nature, so they can produce sinusoidal signals for us, so they can act as sources. And interestingly, any mathematical operation on a sine is a sinusoid. For example, you differentiate it, you integrate it, you get the same thing. Subtract, add. So how do we generally represent a sinusoid? We know we represent it as a function of time, and the amplitude, it may be time varying, the frequency, so the amplitude, the frequency and the phase, any of them can be time varying or any of them can be fixed and one of them can be changing. But that is the general representation of a sinusoid. And we can also represent sinusoids as phasors. So taking the lead from the Euler's theorem, this is the Euler's theorem, where e raised to power
j omega t, you know that, ठीक है ना, e raised to power j omega t. Very difficult to write on a laptop. is equal to cos omega t plus sin omega t plus j sin omega t, ठीक है, cos whatever the argument is okay. So that is the Euler's formula, and basically we can interpret it as a real component and an imaginary component. The real component can be called in phase, and the imaginary component can be called the quadrature component. The important thing to remember is that sine and cosine, they are orthogonal to each other. They have a 90 degrees phase difference among them, and basically this feature or this property is utilized in digital communication. We can have a polar diagram, and with the means of a polar diagram we can represent that phasor. We can have a magnitude and we can have a phase, a signal vector. So the vector representation can have a magnitude and phase representing the amplitude and phase of your signal, and it can be represented also by its rectangular coordinates. So if we split this into its rectangular coordinates, so one will be the real component, one will be the imaginary component. The real one is called in phase, the imaginary one is called quadrature. So this can be represented by its rectangular coordinates. Okay. When there is a magnitude change, we will see the end of the vector if we are representing it by a dot. When there is a magnitude change only or amplitude modulation, we will see that dot moving up and down to indicate that the amplitude is changing. So in AM, this is what the vector will look like. So the vector will be growing and shrinking, representing amplitude modulation. When we have phase modulation or the phase is changing, you will see that the amplitude is fixed but the phase angle is changing. So either decreasing, increasing, decreasing, or changing values. So the phase is changing while the amplitude is constant. We can also actually have both the magnitude and the phase changing. So as you can see here, in this case the magnitude and the phase were of this value, the dot was here, but it can change to a different position, and as you can see both the phase has changed and the magnitude both have changed. So this is basically a type of modulation where both the amplitude and the phase are changing simultaneously. Frequency modulation is hard to detect because you have to follow the movement of the vector. So if that vector is moving like 1 cycle per second, so we have to follow the movement of the dot. 1 cycle per second. Now if changes frequency, it's 2 cycles per second, it will be moving faster, and the rate of revolutions or the revolutions per second will be able to tell you about any changes in frequency, which are difficult to detect because if you are taking a one-time snapshot, you cannot detect change in frequency. You need multiple snapshots. So normally a change in frequency will probably look like a change in phase on such figures. So these polar diagrams really are meant for looking at amplitude or phase changes rather than frequency changes, because it's hard to follow any frequency change. So which one of these figures it represents amplitude modulation, if I may ask you? Which one of them represents phase modulation? And which one of them represents frequency modulation? I leave it to you to make intelligent guesses.
So now we come to the IQ plot. As I mentioned that rectangular representation of the polar diagram is possible. So basically we can split that vector into its rectangular components, one on the x-axis, one on the y-axis. So the x-axis is called I-axis, or the I value in phase 1, and the y-axis value, or the imaginary axis, or the q-axis is called the q value. So we have I and q axes here, as you can see. This is rectangular representation of the polar diagram. The signal vector's projection onto the I-axis is its I component, and its projection on the q-axis is its q component. So basically now we are converting the polar representation to rectangular conversion. And why we do that? For convenience. That is something that is used in digital communication. So for example, talking about AM, in amplitude modulation you will see this line moving up and down, its length varying, no change in phase, just the length varying. That will show that it is AM. Similarly in PM, you will see that the amplitude of the vector is not changing, but its phase is changing, as you can see in this figure here. So that is the IQ plot of PM. So having developed the background for IQ plots, now we come to IQ modulation. So that thing of two components being 90 degrees different from each other, that is exploited in digital communication. So the I and the Q signals, they are mixed with the same local oscillator. So you have one local oscillator, you have a 90 degrees phase shifter, and basically you split your incoming data into I and Q. So one data goes and gets multiplied by the local oscillator. So basically it modulates this local oscillator, whereas the other part of the input data, and that gets multiplied with the local oscillator with the 90 degrees phase difference. So if this is a sine, this is a cosine. So one part gets multiplied by a sine, one part gets multiplied by a cosine. So that is how we are generating these rectangular components of your original vector. And then they are combined to produce the composite output signal. So this is what is happening at the radio transmitter. And just a quick recall, signals with 90 degrees phase difference are also called what? I think you know that. So this is the concept of IQ modulation. That is what is used in digital modulation and digital communication. So rather than having a complex modulation, this simple concept is used. Signals that are in quadrature do not interfere with each other. Remember that. So they don't interfere with each other. This is the concept of IQ modulation happening in radio transmitters. So there are two independent components of the signal. They can be sent and received with simple circuits, and this leads to a simplified radio design. As you can see, one simple oscillator and one phase shifter. That's all what is needed to implement digital modulation in its simplest form. So the main advantage is the symmetric ease of combining independent signal components into a signal composite signal, as you saw on the last slide. उन दोनों को अलग अलग लिया, उनको अलग अलग मॉड्यूलेट किया, उससे आई और क्यू कंपोनेंट्स जनरेट हुए, उनको आपस में सम कर दिया, एंड दैट्स इट, यू गॉट योर सिग्नल रेडी. तो एज यू नो फ्रॉम द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, जब वो दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऐड होंगे, वो मिलकर वही वेक्टर बना देंगे. तो effectively that is the same vector. It's just that we have generated the I and the Q components independently. So what happens at the receiver? अब receiver में उल्टा काम होता है, ठीक है. The input signal is mixed with the local oscillator signal at the carrier frequency in two forms. One is at zero phase, the other is at 90 degree phase shift. तो जो भी incoming signal आ रहा है, once again that is a similar arrangement is used. You have a local oscillator and you have a 90 degrees phase shifter, and that composite signal is made to
mix or multiply with the locally generated oscillator, and in that way we are able to have the IQ components split once again. The composite input signal is broken into the in phase and quadrature components. So this is the reverse process happening at the receiver. These two components of the signal are independent and they are orthogonal. तो जो पिछले स्लाइड पे सवाल आया था वो ये है orthogonal. So basically this is what will be happening. एक जो कंपोनेंट है आपका वो अगर कोसाइन से मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरा जो कंपोनेंट है वो साइन से मल्टीप्लाई हो रहा होगा. And after this modulation they are combined to produce a composite signal. This composite signal acts as an input to the demodulator at the receiver. वहाँ पे once again we have the local oscillator and the 90-degree shifted oscillator, and we again mix them, and after passing them through low pass filters. ये आपको पता है, ये हमने पढ़ा हुआ है कम्युनिकेशन सिस्टम्स में. जब एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल को दोबारा मॉड्यूलेट करते हैं तो उसमें फिर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स बन जाते हैं सम और डिफरेंस के, तो फिर उसमें हम अप्रोप्रिएट फिल्टरिंग करके अपने काम का सिग्नल हासिल कर लेते हैं. सो दैट इज़ हाउ वी आर एबल टू ऑब्टेन आवर डिजायर्ड कंपोनेंट्स. This is the basic idea of IQ modulation and demodulation implemented in digital communication systems. Now we come to a constellation diagram. As you know, digital modulation is easy to accomplish with IQ modulators. The data is mapped to a number of discrete points on the IQ plane. These are basically what are the constellation points. तो अगर ये IQ plane में डिफाइन कर लूँ I और Q प्लेन, तो ये जो मेरे पास ये पॉइंट्स आते हैं, ये जो डिस्क्रीट पॉइंट्स मेरे पास आते हैं इन IQ प्लेन में, दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशन पॉइंट्स. और ये जो पूरा डायग्राम है दैट इज़ कॉल्ड द कॉन्स्टलेशन डायग्राम. तो हमने ब्रीफली डिस्कस भी किया था कम्युनिकेशन सिस्टम्स में कि जो कॉन्स्टलेशन डायग्राम्स हैं वो तस्वीर देखने से आपको फ़ौरन आइडिया हो जाता है कि ये किस लेवल की मॉड्यूलेशन है और एक एक सिंबल जो है वो कितनी बिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. Constellation diagram, it can help us define the amplitude and phase of signal elements, particularly when we are using two carriers. A single element type is shown as a dot. As you know, the diagram has two axes. The x-axis is related to the in-phase component, the y-axis is related to the quadrature component. For each point on the diagram, 4 pieces of information can be deduced. The projection of the point on the x-axis defines the peak amplitude of the in-phase component. The projection on y-axis, it defines the peak amplitude of the quadrature component. दो बातें ये हो गई. The length of the line that connects the point to the origin is the peak amplitude of the signal. तीसरी बात ये हो गई. The angle the line makes with the x-axis is the phase of the signal element. चौथी बात ये हो गई. ठीक है, तो ये चार चीज़ें, ये चार इन्फॉर्मेशन आपको किसी एक डॉट से ऑन द कॉन्स्टलेशन डायग्राम मिल जाती हैं. कोई भी कॉन्स्टलेशन डायग्राम देख लें. ठीक है, देयर आर 3 डिफरेंट कॉन्स्टलेशन डायग्राम शोन हियर. पहला, दूसरा, तीसरा. एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग और क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट कीइंग. सो लेट अस एनालाइज द केसेस सेपरेटली. फॉर एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग वी आर यूजिंग ओनली एन इन फेज कैरियर. सिर्फ एक कंपोनेंट है उसका. देयरफॉर द 2 पॉइंट्स should be on the x-axis. दोनों पॉइंट्स x-axis पे होंगे. एक ज़ीरो एम्पलीट्यूड है और एक हायर एम्पलीट्यूड है. तो ज़ीरो एम्पलीट्यूड that represents at 0 and this amplitude here that represents a 1. So binary 0 has an amplitude of 0 volt, binary 1 has an amplitude of 1 volt for example. The points are located at the origin and at 1 unit apart. जैसे आपको ये नज़र आ रहा है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये. And BPSK we can also implement that by using only in-phase carrier. However, we use a polar NRZ signal for modulation, non-return to 0, bipolar, non-return to 0. So it creates 2 types of signal elements, one with amplitude 1, other with amplitude -1, plus V or minus V. This can be stated in other words.
BPSK creates two different signal elements, one with amplitude 1 volt and in phase, and the other with amplitude 1 volt and 180 degrees out of phase. So this is in phase, this is 180 degree out of phase. This is BPSK. QPSK की बात करें अब, now we will need two carriers, ठीक है ना. QPSK will need two carriers, one in phase and the other quadrature. The point representing 1 1, इस point की बात हो रही है, is made of two combined signal elements both with an amplitude of 1. ठीक है. The amplitude of the final signal element sent for this 2-bit data stream is 2 raised to the power 112 and the phase is 45 degrees. इसका phase 45 degrees है, ठीक है. इसका phase 135 है, इसका -45 और इसका -135. एम्पलीट्यूड तो हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं. स्लाइड में ये बात ये है, ठीक है. हम एम्पलीट्यूड्स कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं. तो जो मेन डिजिटल मॉड्यूलेशन फॉर्मेट्स जो कि इम्प्लीमेंटेड है दुनिया में इस वक्त और मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के लिए यूज़ हो रहे हैं, उसका एक छोटा सा टेबल है जस्ट टू लेट यू नो कि कौन सी मॉड्यूलेशन स्कीम कहाँ यूज़ हो रही है. तो MSK इज़ मिनिमम शिफ्ट कीइंग एंड GMSK इज़ गॉसियन मिनिमम शिफ्ट कीइंग. Binary phase shift keying, quadrature phase shift keying, pi/4 differential quadrature phase shift keying, offset quadrature phase shift keying, frequency shift keying, Gaussian frequency shift keying, vestigial sideband phase shift keying, quadrature amplitude modulation. ठीक है. तो हर एक का अपना अपना यूज़ है. ये मुख्तलिफ एप्लीकेशंस में, टेलीकम्युनिकेशन में ये डिफरेंट डिजिटल मॉड्यूलेशन फॉर्मेट्स यूज़ हो रहे हैं. सो व्हाट आर कीइंग टेक्निक्स? देयर आर सम एग्जांपल्स. अभी पिछली हम सबसे अगर सिंपल हम डिजिटल मॉड्यूलेशन स्कीम्स लें, सबसे सिंपल बाइनरी एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग. क्योंकि हमारा डेटा डिजिटल है, लेट अस से डेटा बाइनरी है, ठीक है. सो ये वोल्टेज लेवल 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वोल्टेज लेवल 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड वी हैव द कैरियर एज एनालॉग. और फिर हम उस कैरियर को मॉड्यूलेट करते हैं बाय यूजिंग दिस सिग्नल. सिंपल प्रोसीजर कर रहे हैं हम, अपने सिग्नल को कैरियर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. जहाँ सिग्नल 0 है वहाँ कैरियर 0 हो जाएगा, जहाँ सिग्नल नॉन ज़ीरो है वहाँ कैरियर लेट से 1 है, इट्स 1, तो वहाँ पे कैरियर अपना जो लेवल है वो रिटेन रखेगा. तो हमारे पास आफ्टर मॉड्यूलेशन कैरियर की ये शेप हो जाएगी, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ ट्रांसमिटेड. So this is binary amplitude shift keying, very simple. Similarly we can have binary phase shift keying, बस वही मैसेज सिग्नल है 1 2 0 से रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड वी हैव आवर कैरियर with 1 we can have a different frequency, for 0 we can have no change in the original frequency. ठीक है. तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आप देख रहे हैं, इस केस में डबल हो गई, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, फिर डबल हो गई, 1 के लिए डबल हो गई, 0 के लिए कांस्टेंट है. तो वी कैन यूज़ अ वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर टू प्रोड्यूस सच सॉर्ट ऑफ अ वेवफॉर्म. तो वो हमारे पास जो है हमें बाइनरी FSK इम्प्लीमेंट कर देगा. ठीक है. बाइनरी है तो सिर्फ 2 फ्रीक्वेंसीज होंगी मॉड्यूलेटेड कैरियर में. दिस इज़ बाइनरी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग. सिमिलरली वी हैव बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग. सिग्नल वही है हमारे पास, कैरियर भी वही है, बट नाउ एज यू कैन सी दैट व्हेन द डेटा चेंजेस देयर इज़ अ 180 डिग्रीज फेज शिफ्ट. तो व्हेनेवर द डेटा चेंजेस फ्रॉम 0 to 1 there is a 180 degrees phase shift, as you can see here. So that can be implemented when we have the right वेवफॉर्म्स. तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो बाईपोलर एनआरसेट यूज़ हुआ हुआ, तो वो खुद से उसकी पोलैरिटी जो है वो चेंज कर देता है कैरियर की. सो दिस इज़ बाइनरी फेज शिफ्टिंग. देन वी मूव ऑन टू क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट कीइंग. चूँकि क्वाड्रेचर है, बाइनरी नहीं है, इसमें हमें 2 कंपोनेंट्स यूज़ करने पड़ते हैं. इट यूजेस 2 सेपरेट BPSK मॉड्यूलेशंस, 1 इज़ इन फेज एंड 1 इज़ क्वाड्रेचर. तो अब ये समझ लें कि 2 BPS को कंबाइन कर दें हम 2 BPSK को, तो वो QPSK बन जाएगी. सो 1 bit goes to one modulator, the next bit goes to the second modulator,
and then the composite signals created by each multiplier are sine waves that have different phases, and the addition results in another sine wave with 4 possible phases. तो हम दोनों को अलग अलग लेते हैं और उन्हें हम आपस में ऐड करते हैं, तो फिर ये काम हो जाता है हमारे पास. तो हमारे पास 2 मॉड्यूलेटर्स हैं, एक ये और एक ये, 90 डिग्री फेज डिफरेंस. तो हम इन दोनों मॉड्यूलेटर्स की आउटपुट्स जो हैं फिर जब आती हैं, 2 स्टेट्स आप कह लें इधर से आएंगी, 2 स्टेट्स इधर आएंगी, जब वो कंबाइन होंगी तो वी कैन हैव 4 पॉसिबल स्टेट्स. तो फिगरेटिवली कुछ ऐसा प्रोसेस होता है हमारे पास जैसे आपको इधर नज़र आ रहा है. तो वी कैन हैव, एज यू कैन सी, फॉर एवरी combination of 2 bits we have a certain phase. So 0 के लिए -135, 10 के लिए -45, 01 के लिए 135, 11 के लिए 45. ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है, किसी भी बिट कॉम्बिनेशन के लिए इनमें से कोई भी फेज़ हो सकता है, जो कि QPSK के 4 फेजेस हैं. लेकिन मेन चीज़ ये है कि ये किसी न किसी प्रिंसिपल के तहत बने हुए हैं, और हमारा जो अल्टीमेटली कैरियर होता है, अगर वो कैरियर विद 45 डिग्रीज फेज़ है तो डेट बेसिकली रिप्रेजेंट्स दिस बिट कॉम्बिनेशन. अगर वो -45 डिग्रीज फेज़ है तो डेट बेसिकली रिप्रेजेंट्स दिस बिट कॉम्बिनेशन, एंड सो ऑन. तो ये आप देख रहे हैं कि हर एक वेव जो अपने ड्यूरेशन में वो एक डिफरेंट फेज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, विच बेसिकली रिप्रेजेंट्स अ यूनिक बिट कॉम्बिनेशन. So this is QPSK. अगर हम समराइज़ करना चाहें एक ही फिगर में, तो अगर हमारे पास फेज शिफ्ट कीइंग है तो उसमें एम्पलीट्यूड नहीं चेंज हो रहा, फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज हो रही, फेज चेंज हो रहा है, और मल्टीपल फेजेस हो सकते हैं. M represents the number of unique phases we can have. और अगर वो बाइनरी है तो हमारे 2 फेज होंगे, M is equal to 2 में एक इधर होगा एक इधर होगा. फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग में वी विल हैव द फ्रीक्वेंसी चेंजिंग इन द इक्वेशन. मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज होंगी, तो डिपेंड्स. अगर हमारे पास लेट से 3 है, इसी तरह एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, उसमें एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा होगा, एज यू कैन सी हियर इन दिस फिगर. तो यहाँ पे 3 मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज हैं, यहाँ पे 2 फेजेस हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 एम्पलीट्यूड्स हैं. और वी कैन हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ एम्पलीट्यूड एंड फेज मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग एंड फेज शिफ्ट कीइंग कंबाइंड, कलेक्टिवली कॉल्ड एम्पलीट्यूड फेज कीइंग. यहाँ पे दोनों चेंज हो रहे हैं हमारे पास, एज यू कैन सी हियर एम्पलीट्यूड भी चेंज हो रहा है और फेज भी चेंज हो रहा है. सो दिस इज़ व्हाट इज़ बेसिकली QAM, क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जहाँ पे एम्पलीट्यूड और फेज दोनों चेंज हो रहे हैं. तो ये M = 8, तो ये 8 हमारे पास मुख्तलिफ फेज़ या एम्पलीट्यूड कॉम्बिनेशंस हो सकती हैं. कि इनर सर्कल ये और एक आउटर सर्कल ये हमारे पास मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस हो सकती हैं. तो 4 कॉम्बिनेशंस इधर हैं जैसे QPSK में होता है, और फिर 4 कॉम्बिनेशंस इधर हैं इस सर्कल पे, तो टोटल 8 कॉम्बिनेशंस हो. So these are some illustrative examples of different digital modulation schemes. Now we come over to bit rate and symbol rate. ठीक है, bit rate as we know is the number of bits per second, that is the frequency of a system bit stream, number of bits per second. For example, अगर आपके पास एक 8 bit का sampler है, तो sampling हो रही है and every sample is getting represented by 8 bits, and then we are doing the sampling at 8 kilohertz. तो हमारा इसका बिट रेट क्या बनेगा, इस सिस्टम का, इस अरेंजमेंट का बिट रेट क्या बनेगा. तो सोचें इस पर, थिंक ऑफ द राइट आंसर्स. तो ये 64 किलो बिट्स पर सेकेंड बनेगा, और ये तो हो गया बिट रेट. ठीक है, नंबर ऑफ बिट्स पर सेकेंड. सिंबल रेट क्या है? सिंबल रेट इज़ द बिट रेट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ बिट्स दैट कैन बी ट्रांसमिटेड विद ईच सिंबल. तो एक सिंबल कितनी बिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, कितनी बिट्स की कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. अगर हम बिट रेट को उससे डिवाइड कर दें, उस तादाद से, द नंबर ऑफ बिट्स रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल, ट्रांसमिटेड बाय अ सिंबल,
तो वो हमें सिंबल रेट मिल जाएगा। उसको हम बॉड रेट भी कहते हैं, सिंबल रेट को बॉड रेट भी कहते हैं। ओके सर, नाउ वी कम ओवर टू द डिस्कशन अबाउट बिट रेट एंड सिंबल रेट। ठीक है, बिट रेट और सिंबल रेट में थोड़ा सा फ़र्क है, उसकी एग्जांपल के लिए हम आए हैं इधर। तो लेट्स से अगर हमारे पास QPS के we have 4 points on the constellation diagram, 4 constellation points हैं, and as we discussed previously, these 4 constellation points, basically every point represents a unique combination of 2 bits, as you can see here in this example. So every symbol basically represents, और every symbol can transmit 2 bits. तो अगर मैं ये एक symbol transmit करता हूँ, एक अपना सिग्नल भेजता हूँ कैरियर विथ 45 डिग्रीज फेज़, और वो ट्रांसमिट हो जाता है, रिसीव हो जाता है, तो जब वो डिकोड होगा तो दैट विल बी डिकोडेड एज रिप्रेजेंटिंग दीज 2 बिट्स। अगर मैं -45 डिग्रीज वाला सिग्नल भेजता हूँ तो ये जब रिसीव होगा और डीमॉड्यूलेट होगा तो दैट विल बी डिकोडेड एज रिप्रेजेंटिंग दिस बिट कॉम्बिनेशन। अगर मैं BPSK की बात करूँ तो मेरे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, ओनली 2। ठीक है, सो वी हैव 1 बिट पर सिंबल। और अगर मैं 8PSK की बात करूँ तो आई हैव गॉट 8 पॉइंट्स, all different in their phases, and so every symbol here, every point, every constellation point or every symbol here, that represents 3 bits. तो सिंबल रेट जो हमने डेफिनेशन पिछली स्लाइड पे देखी, सिंबल रेट इज़ बिट रेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बिट्स पर सिंबल। तो इसका सिंबल रेट, चूँकि बिट्स पर सिंबल यहाँ पे 1 है, तो इसका सिंबल रेट और बिट रेट बराबर होंगे। इसका सिंबल रेट क्या होगा? बिट रेट डिवाइडेड बाय 2। इसका होगा सिंबल रेट बिट रेट डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, सो पॉइंट क्या है सारा ये सिंबल रेट और बिट रेट का? If more bits can be sent with each symbol, then the same amount of data can be sent in our narrower spectrum or lesser time. एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। लेट्स से कि हमारे पास ऐसा सिस्टम है विच हैज़ द कैपेबिलिटी ऑफ कम्युनिकेटिंग या ट्रांसमिटिंग 2 सिम्बल्स पर सेकेंड। तो फिर बिट रेट क्या बनेगा अगर हम QPSK यूज़ कर रहे हैं एज मॉड्यूलेशन? तो 2 सिम्बल्स पर सेकेंड एंड 2 बिट्स पर सिंबल, तो ये हो जाएगा 4 बिट्स पर सेकेंड। इसके केस में, QPSK के केस में, द आंसर विल बी 4 बिट्स पर सेकेंड। और अगर मैं 8PSK की बात करूं, 8PSK एज वी नो दैट एवरी सिंबल रिप्रेजेंट्स 3 बिट्स, सो द सक्सेसफुल ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ 1 सिंबल विच विल मीन कि मैंने 3 बिट्स ट्रांसमिट और रिसीव किए। तो अगर एक ऐसा सिस्टम है जिसका सिंबल रेट्स 2 सिंबल्स पर सेकेंड है, तो एक सिंबल में 3 बिट्स, तो 2 सिंबल्स पर सेकेंड का मतलब होगा कि उस सिस्टम का बिट रेट हो गया 6 बिट्स पर सेकेंड। तो एज यू कैन सी दैट इज़ हाउ द सिंपल रेट इज़ कनेक्टेड टू द बिट रेट। तो इसका हासिल क्या है कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ बिट्स पर सिंबल होंगे हमारे पास, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ बिट्स पर सिंबल होंगे हमारे पास, उतना ही हमारा बिट रेट ज़्यादा होता जाएगा। या तो एक ख़ास नंबर ऑफ बिट्स कम टाइम में चली जाएंगी, या उतने ही, अगर हम टाइम को कांस्टेंट रख रहे हैं तो उतनी टाइम में ज़्यादा बिट्स चली जाएंगी। अच्छा, तो यहाँ पे हमने मुख्तलिफ कॉन्स्टेलेशन डायग्राम्स को कंपेयर किया अलॉन्ग विद देयर बिट कॉम्बिनेशंस। तो ये कॉन्स्टेलेशन डायग्राम जो है ये BPSK की है, BPSK। ठीक है, दिस इज़ BPSK। और ये जो है ये 4 पॉइंट्स है, ये QPSK। ओके, QPSK, ये है BPSK।
and this is 16 QAM. तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, नंबर ऑफ़ पॉइंट से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस लेवल की मॉड्यूलेशन है। ठीक है, तो जहाँ 2 कॉन्सोलेशन पॉइंट्स हैं तो बाइनरी लेवल की है, जहाँ 4 कॉम्बिनेशन पॉइंट्स हैं तो 4 लेवल या क्वाड्रेचर लेवल है। अब यहाँ पे 16 कॉन्सोलेशन पॉइंट्स हैं तो 16 लेवल होगा। तो लेवल का तो इससे पता चल गया, नंबर ऑफ़ कॉन्सोलेशन पॉइंट्स को देखने से। अब मॉड्यूलेशन कौन सी है, ये आप जब फिगर को देखें तो अंदाज़ा होगा। ये दोनों पॉइंट्स सेंटर से ओरिजिन से इक्वल फासले पे हैं, तो इट मीन्स कि यहाँ पे एम्पलीट्यूड चेंज नहीं हो रहा। हाँ, अलबत्ता उनके फेज़ डिफरेंट है। इस पॉइंट का फेज़ 0 है, इसका 180 डिग्रीज या -180 डिग्रीज है। तो यानी कि ये फेज़ मॉड्यूलेशन है, फेज़ शिफ्ट कीइंग है। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे वंस अगेन ओरिजिन से सारे पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस या इक्वल मैग्नीट्यूड पे हैं, यानी कि एम्पलीट्यूड नहीं चेंज हो रहा, देयर फेज़ इज चेंजिंग। चूँकि 4 हैं इस वजह से दैट इज़ कॉल्ड क्वाड्रेचर PSK। यहाँ पे आप देखें दिस मॉड्यूलेशन, तो यहाँ पे दोनों चीज़ें चेंज हो रही हैं, फेज़ भी चेंज हो रहा है और एम्पलीट्यूड भी चेंज हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इन 2 पॉइंट्स की बात करूँ, इन 2 पॉइंट्स की, इसकी और इसकी, दे लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, दे लाई ऑन द सेम फेज़ लाइन, इनका फेज़ एक ही है, लेकिन इन दोनों पॉइंट्स के एम्पलीट्यूड में फ़र्क है। लेकिन अगर आप इस पॉइंट और इस पॉइंट को देखें तो इन दोनों का एम्पलीट्यूड एक है, लेकिन इनके फेज़ में डिफरेंस है। तो बेसिकली दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एम्पलीट्यूड एंड फेज़ मॉड्यूलेशन विच इज़ कॉल्ड क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो यहाँ पर ये मुख्तलिफ कॉन्सोलेशन पॉइंट्स जो हैं, दे आर रिप्रेजेंटिंग एवरी सिंगल कॉन्सोलेशन पॉइंट ऑन अ कॉन्सोलेशन डायग्राम दैट रिप्रेजेंट्स अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ बिट्स। ठीक है, तो अब 1000 को ये रिप्रेजेंट कर रहा है और कोई रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो अगर मेरे पास पीछे से जो बिट कॉम्बिनेशन आ रही है डिजिटल मॉड्यूलेटर ब्लॉक में, वो बिट कॉम्बिनेशन ये आई है 1000, तो अगेंस्ट दिस बिट कॉम्बिनेशन मैं एक ऐसा कैरियर जनरेट करूँगा जिसका एम्पलीट्यूड इतना होगा और फेज़ ये होगा, वट एवर दैट इज़ 135 डिग्रीज़। तो 135 डिग्रीज़ विद दिस एम्पलीट्यूड जब मैं भेजूँगा और ये जब रिसीवर पे जब रिसीव होगा और उसे पता है कि कौन सी मॉड्यूलेशन यूज़ हो रही है, तो वो फिर इससे अंदाज़ा लगाएगा कि अच्छा ये तो ये वाला डॉट भेजा गया है, और रिसीवर को पता है कि जी इस डॉट के पीछे ये बिट कॉम्बिनेशन है। तो जब वो डिकोड करेगा तो इफ़ इट रिसीव्स दिस डॉट, तो वो 1000 परसीव करेगा कि ये उसने रिसीव किया है या ये ट्रांसमिट हुआ था। इसी तरह अगर उसने ये रिसीव किया तो फिर वो कहेगा कि 0010 भेजा गया था। अब अपेरेंटली तो ये लग रहा है कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो बस ये नंबर ऑफ़ डॉट्स या नंबर ऑफ़ कॉन्सोलेशन पॉइंट्स बढ़ाते जाओ, यानी कि सिंबल्स बढ़ाते जाओ, नंबर ऑफ़ सिंबल्स मॉड्यूलेशन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करते जाओ और काम अच्छा होता जाएगा। एवरी सिंबल विल रिप्रेजेंट मोर बिट्स, दैट मीन्स कि जब भी एक सिंबल ट्रांसमिट होगा तो और ज़्यादा बिट्स ट्रांसमिट हो जाएंगी। तो ये हमने लास्ट उसमें भी इसको हल्का सा टच किया था। तो इसका प्लस पॉइंट तो ये है कि जी आपका इफेक्टिवली बिट रेट या कम्युनिकेशन रेट ज़्यादा हो रहा है, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। अगर आप इस तस्वीर को देखें एक्सिस को, और लेट्स से कि एक्सिस की स्पेस लिमिटेड है और मैं 16 QAM को 32 QAM बनाना चाहता हूँ, और 32 QAM बनाने के लिए मैं ये करूँगा कि मैं लेट्स से बीच में एक एक पॉइंट और ऐड कर दूँ। एक पॉइंट इधर ऐड कर दिया है इनके बीच में, ठीक है। इसी तरह एक पॉइंट इधर ऐड कर दिया इनके बीच में, एक पॉइंट इधर ऐड कर दिया इनके बीच में, एक पॉइंट इनके बीच में ऐड कर दिया। सिमिलरली लेट्स से मैंने एक पॉइंट इधर ऐड कर दिया, इधर ऐड कर दिया, इधर ऐड कर दिया। So I am increasing my consolation points using a more complex modulation scheme.
लेकिन इससे अब होगा क्या, कॉन्सलेशन पॉइंट्स के दरमियान जो गैप है आपस में वो कम होता जा रहा है। एज द नंबर ऑफ कॉन्सलेशन पॉइंट्स इंक्रीज ऑन अ कॉन्सलेशन डायग्राम, द गैप बिटवीन देम इट गेट्स डिक्रीज्ड। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करता हूँ, लेट्स टॉक अबाउट दीज 3 पॉइंट्स। अगर 16 को m है, मैंने ये ट्रांसमिट किया, ये वाला कैरियर विद दिस फेज एंड एम्पलीट्यूड, थोड़ा सा नॉइस, डिस्टॉर्शन, इंटरफेरेंस वगैरह वगैरह कुछ भी आई, और इसका लेवल ये हो गया, लेट्स से यहाँ पे जहाँ पे मेरा कर्सर है इस वक्त, इसका लेवल ये हो गया। अब रिसीवर को रिसीव हुआ, ये रिसीव हुआ। अब रिसीवर ने आइडिया लगाना है रिसीव्ड उससे कि इन 16 पॉइंट्स में से कौन सा ट्रांसमिट हुआ था। तो चूँकि जो उसे रिसीव हुआ है वो इन सब 16 पॉइंट्स में से इसके सबसे ज़्यादा करीब है, तो चांस ये है कि वो गलती नहीं करेगा रिसीवर, और सही से डिकोड कर लेगा कि ये भेजा गया था। लेकिन लेट्स से अगर ये थोड़ा सा डिस्टर्ब होके इधर आ गया, बिल्कुल इन दोनों के सेंटर में इधर आ गया, तब रिसीवर किसके हक़ में फ़ैसला करेगा, इसके हक़ में या इसके हक़ में, किसके हक़ में फ़ैसला करेगा? या अगर इन दोनों के सेंटर में आ गया बिल्कुल, फिर रिसीवर क्या डिसाइड करेगा कि ये ट्रांसमिट हुआ था या ये ट्रांसमिट हुआ था? दैट इज़ व्हेन द रिसीवर स्टार्ट्स मेकिंग मिस्टेक्स। तो जैसे जैसे ये कॉन्सलेशन पॉइंट्स आपस में करीब होते जाएंगे ना, हमारे पास जो मार्जिन है अगेंस्ट एनी सॉर्ट ऑफ इम्पेयरमेंट वो कम हो जाएगा। तो अगर अभी 16 को m है तो ये पॉइंट डिस्टर्ब होके तकरीबन इधर तक आ जाए, शायद रिसीवर गलती ना करे। इसी तरह ये पॉइंट डिस्टर्ब होके अगर इधर तक चला जाए, शायद ये रिसीवर गलती ना करे। लेकिन अगर 16 को m की जगह लेटस से मैं इसको 32 को m बनाने की कोशिश करूं और ये एक इजाफी पॉइंट मैं बीच में डाल दूं, ये जो मैंने शो किया हुआ, अब आप देखो कि मेरे पास इस पॉइंट के लिए द मार्जिन अगेंस्ट इम्पेयरमेंट्स वो बहुत थोड़ा रह गया, बस इतना सा रह गया। इतनी सी भी डिस्टर्बेंस आ गई, इससे ज़्यादा हुई डिस्टर्बेंस, और ये अगर पॉइंट यहाँ से डिस्टर्ब होके इधर हो गया, तो फिर जब रिसीवर डीमॉड्यूलेशन करेगा तो वो इसके हक़ में फ़ैसला देगा। सो दैट इज़ व्हाट हैपन्स एज यू गो हायर इन मॉड्यूलेशन स्कीम्स। हमारे पास सिग्नल टू नॉइज़ रेशो रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती जाती हैं, फिर हम मामूली सी भी इम्पेयरमेंट बर्दाश्त नहीं कर सकते इन द कम्युनिकेशन सिस्टम। तो जहाँ मामूली सी भी इम्पेयरमेंट आई, वो नॉइज़ जो है वो एम्पलीट्यूड में हो या वो नॉइज़ फेज़ में हो, दोनों किस्म की नॉइसेस हो सकती हैं। तो एम्पलीट्यूड डिस्टर्ब हुआ या फेज़ डिस्टर्ब हुआ, एंड इफ़ इट मूव्स, इफ़ इट लीव्स इट्स मीन पोजीशन, और वो ज़्यादा उससे डिस्टर्ब हो गया, तो फिर रिसीवर ने किसी और पॉइंट के हक़ में फ़ैसला कर देना है और वो डिकोडिंग गलत हो जानी है। और जब ये डिकोडिंग गलत हो जाएगी तो फिर एरर्स आने शुरू हो जाएंगे। जब एरर्स आने शुरू होंगे देन योर कम्युनिकेशन सिस्टम बेसिकली फेल्स। ठीक है, सो दैट इज़ द प्लस एंड द माइनस ऑफ द कॉम्प्लेक्स मॉड्यूलेशन स्कीम्स।